पहले क्लाइंट को चाहिए। यार मैंने आपसे कुछ कहा था। क्या कहा था आपने? मैंने आपसे कुछ कहा था ना। क्या कहा था? मैं भूल गया हूँ। यार आप ज़्यादा अनजान ना बने, मुझे पता है आपको पता है। क्या पता है मुझे? मैंने आपको बोला था कि मुझे अपने साथ ट्रिप पर लेके जाएं। अच्छा, आप इस प्रोजेक्ट को एडिट करें, ठीक है, फिर मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। मतलब मैं पूरी ज़िंदगी एडिटिंग करता रहूँगा? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसको एडिट करो, फिर मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। आप मेरी बात सुने, हाँ हाँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। हम जाते हैं ट्रिप पे। अच्छा, जब वापस आएंगे इसको एडिट कर लेंगे। ना कर यार, ये बहुत अर्जेंट है यार। बस मैं नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे अपने साथ ट्रिप पर लेके जाएं। हाँ जब हम वापस आएंगे फिर उसको एडिट करेंगे। चलो ठीक है, कहाँ जाना पसंद करोगे? किसी ऐसी जगह पर ले जाना हाँ जहाँ पर नेचर भी हो, हाँ एडवेंचर भी हो, हाँ करने के लिए भी कुछ हो, देखने के लिए भी कुछ हो। हाँ। मतलब एक मुकम्मल पैकेज हो। फिर तो आपके लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। वैसे कहाँ लेके जा रहे हैं? सरप्राइज़ है ना, जब सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ तो किसी को नहीं बताते ना। चलो ठीक है। चलो, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया ख़ान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालम जबा में और ये मेरा होटल है जिसका नाम है सैमसन रिज़ॉर्ट। फैमिली के लिए बेस्ट जगह है और मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इस होटल के हाँ जी, हाँ जी, प्रोजेक्ट का क्या बना यार? बस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मालम जबा की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, आप इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलो ठीक है। मालम जबा दरअसल दो गांव का नाम है। मालम मौजूद हूँ मालम जबा में और ये मेरा होटल है जिसका नाम है सैमसन रिज़ॉर्ट। फैमिली के लिए बेस्ट जगह है और मैं जानता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे इस होटल के बारे में बहुत कुछ पूछने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होटल का गूगल लोकेशन और राब्ता नंबर मौजूद है। आप यहाँ के स्टाफ से खुद My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? My mother would be on the sidelines, and if the play on the field started going one way, my mother would run along like, Mark, get him, get him. I'd be like, oh my gosh. I'd get in the huddle with the other guys. They go, Mark, is that your mother? I go, no, I never saw her before in my life. See, the greatest gift my mother ever gave me, she believed in me. I have overdosed on drugs on 3 occasions where I should have been dead. But I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out with losers, and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, laughing in the car. We'd pull up in front of my house in New York. They go, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, she'd say, hi, Mark, how was your night? I go, it was good, Mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you for a minute? I go, Mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, man, just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door.
on the one person who believed in me. I was on a worldwide tour and we were wrestling overseas in Japan. After my wrestling match, I went upstairs in my hotel room and I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed, I looked through the safety window and I could see it was a Japanese promoter. So I opened the door and he said, "Mark, you need to call home. There's been an emergency." I went and got on the hotel room phone. I called back to the United States. I said, "Hey, what's going on?" They said, "Mark, I don't know how to tell you this." I said, "Just tell me what happened." All of a sudden they started crying. They go, "Mark, I can't tell you." I said, "Just say it." They said, "Mark, your mother died." I just threw the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby, and when the doors opened up, I just ran out into the street. I mean, there was no cars, there was no people. It was 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of a street in Hiroshima, Japan, and I remember looking up and just saying, "Mom, I am so sorry." I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking from a distance. I kept thinking to myself, my mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? My mother would be on the sidelines, and if the play on the field started going one way, my mother would run along like, "Tell you." I said, "Just say it." I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking from a distance. I kept thinking to myself, "Mom, please wake up. Please get up." And then I finally got the nerve to walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over and I said, "Mom, you are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You loved me so much. You gave me a life. You're the only one that ever believed in me." How did I repay her? By getting drunk, by getting high, by getting stupid, by hanging out with losers? For what? All she ever wanted to do was talk to me. I wish I could talk to you now, Mom. I wish you could see what I'm doing. Why couldn't I have been a better son? We are defined by our choices. But if you surround yourself with people involved in drugs and alcohol and pills, it's a dead end. I'm not here to preach to you. I'm here to tell you I lived that life. It leads to broken hearts, broken relationships, broken dreams, and death. For what? To get You are here again? Yeah, I got another virus. Hey, can I have a shirt? A shirt? Perfect, thank you. Get low? Get low, let's check this out. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Mark my words. ये है टाटा की पंच गाड़ी जिसका बेस मॉडल 6,25,000 रुपए से शुरू हो जाता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन टाटा हमेशा अपने कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रख के गाड़ियां बनाता है। इस 6.25 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर 20 लाख रुपए तक की गाड़ी के सेफ्टी फीचर दिए हुए हैं। जैसे ही गाड़ी को स्विच ऑन करते हैं तो इसके मीटर के ऊपर इंडिकेशन दिखा रहा है कि आपका टेल गेट ओपन है। फिर भी कभी ध्यान नहीं गया, जैसे ही मैं इस गाड़ी को आगे चलाऊंगा ये इंडिकेशन देगा कि आपका टेल गेट ओपन है।
gate open. Please check. भाई 5 स्टार रेटिंग, मजबूत लोहा और इतने सारे सेफ्टी फीचर के साथ में केवल और केवल 6.25 लाख रुपए में ये गाड़ी आती है। अगर आप भी गाड़ी लेना प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक है तो मत बेटी आई बाबा। जो तेरा किया है सब यहीं रह जाएगा और जो तेरा है लौट के वापस आएगा। देखो मैं रोज रोटी देती हूँ और ये मुझे बद्दुआ दे के जाता है। ऐसा करती हूँ इसको रोटी में जहर मिला के दे देती हूँ। आज बुड्ढा जहर की रोटी खाएगा। नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, मैं दूसरी रोटी देती हूँ। लो बाबा। माँ, भाई, बेटा तू इतने वक्त से कहाँ था? हम तो समझे थे कि तू जंग में शहीद हो गया। माँ, मुझे कुछ आतंकवादियों ने पकड़ लिया था और वहाँ से भाग निकला। रास्ते में वो फकीर बाबा ना मिलते तो मैं भूख प्यास से मर ही जाता। मानो वैसा लग रहा था कि वो रोटी आपके हाथ की हो। कुछ बोल रहे थे वो। तेरा किया हुआ सब यहीं रह जाएगा और तेरा लौटकर तेरे पास आएगा। किसी को बिना सोचे समझे सजा ना दें। बेटी 2020 to TikTok chat. iPhone or this super cute robot? iPhone. Oh my god, you're such a poor robot. Oh, don't worry, don't worry. I will take care of you. ये गाड़ी किसकी है? आप कौन हो? मैं एक ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ। गाड़ी किसने खड़ी की है? अरे साहब, हाँ ये मेरी गाड़ी है। ये गाड़ी तेरी है? तुझे नहीं पता यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते? चल अब इसका फाइन भर। फाइन तो नहीं दूंगा मैं। नहीं देगा? गाड़ी के पेपर काट। वो भी नहीं दूंगा। नहीं देगा? चल फिर थाने चल। तेरे को मालूम है मेरा बाप कौन है? तेरा बाप कोई भी हो, तू नहीं आएगा तो गाड़ी ले आजा, जाऊंगा। तू ले जा, मैं थाने से छुड़वा लूंगा। ओए सुन, ये गाड़ी तू लेके जा रहा है ना? तू देख, मेरा भाई आएगा और तुझसे गाड़ी वापस लेके जाएगा और तुझे देना भी पड़ेगा। ठीक है। ओ भाई, ओ रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? गाड़ी मेरी ओए, ट्रैफिक पुलिस हूँ और मुझे पता है तू उसका भाई है। अरे भाई, यहाँ गाड़ी लगाना अलाउड नहीं है। यहाँ गाड़ी पार्क मत करो। तेरे बाप की रोड है क्या? मैं तो ये गाड़ी खड़ी करूंगा, तुझसे जो होता है कर ले। भाई, बाप पे मत जाओ और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं तुमको तुझे पता है मेरा बाप कौन है? मैं तो ये गाड़ी खड़ी करूंगा। अब ये गाड़ी थाने से लेके जाना। किसका भाई? ओए ओए, बात तो सुन ले, गाड़ी मेरी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ये गाड़ी किसकी है? आप कौन हो? गाड़ी कितनी गंदी हो गई है, धुलवाना पड़ेगा।